morning class. I am again in front of you, and today we have to discuss on the topic partners capital account. And just 2 days before, we have discussed on the P&L application account. We have solved all the topics of application account, and now today we have to discuss on partners capital account. The first thing is that what is partners capital account and why it is prepared. So what is the partner capital account? All transaction of the partners. In a partnership firm, who are partner, they are the owners. So all the transaction of a partner. What type of transactions? Salary, commissions, interest on capital is the IOC, drawings, interest on drawing, etc. are transferred to partners capital account. Only those transactions which we have discussed in appropriation account. Okay, only those transactions which comes in P&L appropriation account. All those transactions we will transfer in partners capital account, because it may increase or decrease the capital of the partner. Or in short, you can say कि partners capital account means how much capital he is introduced, and during the business if he has earned profit, then its capital will increase, and if there is loss, then the capital will reduce. आप अपना भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर आप कहीं मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो आपको सैलरी तो मिलेगी, या एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको सैलरी मिलेगी. तो बैंक आपका इंस्टीट्यूट भी आपके लिए पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन करेगा. भाई ये एम्प्लॉय है हमारे यहाँ पे, वी हैव टू गिव देम सैलरी. इफ़ यू एडवांस सम अमाउंट, he will maintain that thing. If you withdraw some amount, if you take a loan from your institution, that clerk will maintain all these things. So the account maintained by that clerk on behalf of you, that is your, you can say, your capital account. Okay. In the same way, in application accounts, only the amount which is distributed among owners or partners, and those amounts we will calculate at, and this account is maintained separately for all the partners. This partner capital account is maintained separately for all the partners, and how much you will get, how much X will get, how much Y will get, how much Z will get as a partners. Okay, so you can say this capital account is a personal account. You can say this is a bank account of the partners. This is a bank. How much partners will get, how much partner will give to the firm, how much is capital increase, how much is capital is reduced. To know all these things, we prepare partners capital account. So how much salary he will get, it will come in appropriation account, and also it will come in partner capital account. So all the things which comes in appropriation account is a one account in which we show all the partners, and that amount is separately transferred to their capital account. So partner capital account is maintained by the firm on behalf of the partners separately of each partner. There are 10 partners, then 10 partners capital account is maintained for each and every partner, and how much is capital will increase and how much is capital will decrease. Capital may increase by salary and commissions, and capital may reduced by amount withdrawn by the owner, that is drawing. Okay. So two methods of preparing capital account. There are two methods of preparing capital account in your syllabus. The first one is fixed capital method, and next one is fluctuating capital method. Okay. So what is fixed capital method? As we know that all the partners are entitled for interest on their capitals. Suppose Mr. X has capital of rupees 1 lakh, and in the partnership deed there is 6% on interest on capital, then he may get 6,000 rupees as interest. Okay,
So what is the capital account? Under this, it is decided that capital may not change by any financial transaction. भाई ये है कि कोई पार्टनर है, अगर वो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो है वो भविष्य में चेंज ना हो। आज उन्होंने अगर 1 लाख रुपए कैपिटल दिया, किसी पार्टनर ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 3 लाख रुपए दिया। भाई हमने तो पढ़ा है कि ऑक्यूपेशन अकाउंट बनाया जाएगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, तो उनका क्या हो सकता है, कैपिटल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो ड्राइंग भी करेगा तो कम हो सकता है, तो कम ज़्यादा ना हो। वो चाहता है मेरे कैपिटल के ऊपर असर ना हो इस सब चीज़ का। तब क्या होगा, तब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर। अगर अब इससे क्या फ़ायदा होगा, सपोज वो चाहता है कि भाई कैपिटल चेंज ना हो और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा मिलेगा, क्योंकि भाई भविष्य में पैसे की जरूरत सबको पड़ सकती है, वो कुछ कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम आएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो वो हमेशा चाहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड बना रहे। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अंडर फ्लक्चुएटिंग capital, partners are ready. He is ready that, or if its capital may increase or decrease, capital may increase by salary commission, the capital may reduce by drawing and interest on drawing. So he wants that whatever my capital will increase or decrease, no problem. I have no problem, my capital will increase or decrease, show me the real position. So ये बिल्कुल फ्लक्चुएट करना होता है ऊपर नीचे। किसी साल सैलरी कमीशन जो है ज़्यादा आ गया तो कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, से कमीशन कम आए तो थोड़ा कम हो सकता है, उसने पैसा विड्रॉ किया तो और डाउन हो जाएगा। बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है या तो ऑक्यूपेशन का प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। जो पार्टनर ऐसा चाहते हैं, दो पार्टनर जो ऐसा चाहते हैं कि भाई जैसा चल रहा है हर चीज़ हमारे कैपिटल में आप ऐड कर दीजिए, हम फिक्स नहीं चाहते, हमारा कैपिटल अगर चेंज होता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो लोग चाहते हैं दे प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स्ड में क्या होता है, दोज पार्टनर हु वांट दैट देयर कैपिटल विल बी फिक्स्ड एंड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल कम्स इन अनदर अकाउंट। तो इसीलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक फिक्स कैपिटल, भाई उन्होंने कहा कि हमारी 2 पार्टनर एक्शन वाई, एक का 1 लाख है कैपिटल, दूसरे का 2 लाख रुपए कैपिटल है, तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन सैलरी तो मिलेगी, कमीशन तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको मिलेगा ही, तो उसके लिए दे हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो in this method we'll see, in this method 2 accounts are prepared. The first one is capital accounts and another one is current. In capital account the capital which is fixed, that amount will come. If you withdraw then it will come. If you add some capital it will come in capital account, and another financial transactions like salary, commission, interest drawing and all that thing will come in current. And in fluctuating method we will combine it, these two all will come in single capital account and fluctuating capital method. Okay, so there is a format of partners capital account. The format is given. Balance ready, subset because we are maintaining capital account. Okay, and this capital account is already prepared in previous year, or you can say it will comes in the balance sheet. So you can also borrow from the balance sheet also. So credit balance means the income is more, so that may be having some balance. So it will transfer in credit side. And if it is a debit balance, it will decrease, it will come in debit. Then
क्रेडिट मतलब मैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया था क्लास 11 में, क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाना, डेबिट मतलब पैसा विड्रॉ हो जाना। ओके, तो क्रेडिट मतलब जो पैसा इनके अकाउंट में जमा होगा, क्या जमा होगा, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल बिजनेस में लाएगा तो पैसा जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इनके अकाउंट में। दूसरा सैलरी, उसको सैलरी मिलेगी, उसके अकाउंट में क्या होगा, पैसा जमा होगा, क्रेडिट होगा। सो सैलरी क्या होगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। कमीशन अकाउंट क्या होगा, तो कमीशन मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा। और कैपिटेशन अकाउंट पहले तो बनाया ही होगा, कैपिटेशन का पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L application. Okay, so P&L application का profit है, it will come in this side, and if it is loss, then it will come in this. Then come here, see this side, we have discussed this one. Then drawing, it will come in debit side. Interest on drawing will also come in debit side, because drawing is withdrawal of capital into debit. They are reducing. ये add increase कर रहे हैं, तो credit हो रहा है, decrease करेंगे यहाँ पे. Then balance sheet is some amount will be balanced. This amount will be transferred to balance sheet. Okay, so this is the format of partners capital account. By doing some questions, we can easily understand what is partners capital account. So let's start. So there is a one question also. By this question, we will discuss how to solve partners capital account in my next video. Okay.